हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम. आज आपण इथे बॉम्बे हायकोर्ट क्लर्क 2026 ची जी रिक्रुटमेंट आहे त्यासाठी कम्प्युटर अवेअरनेस हा जो सेक्शन आहे यासाठी टॉपिक 6 बेसिक कम्प्युटर रिपेअरिंग दॅट इज हार्डवेअर याचे एमसीक्यूज आपण इथे सॉल्व्ह करत आहे. आणि ही जी सिरीज आहे ही टिल एक्झाम पर्यंत जी आहे ती स्टार्ट राहणार. तर ज्यांनी आतापर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब नाही केलं ते चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. मीन्स नोटिफिकेशन थ्रू तुम्हाला सर्व व्हिडिओज मिळून जाणार. तसंच बघा, बॉम्बे हायकोर्ट क्लर्कसाठी कम्प्युटर अवेअरनेसचे शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ सुद्धा अवेलेबल आहे. ज्यांना पण पीडीएफ हवी असेल व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे, व्हॉट्सअपला मेसेज करून पीडीएफ तुम्ही परचेस करू शकता. तर चला स्टार्ट करूया. इथे आपण बेसिक कम्प्युटर रिपेअरिंगचे काही एमसीक्यूज. तर बघा, फर्स्ट आहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मदरबोर्ड. तर बघा, ऑप्शन आहे इंटरकनेक्टिंग कंपोनंट्स, पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा कम्युनिकेशन, परमनंट डेटा स्टोरेज अँड providing expansion slot. तो करेक्ट आंसर आहे फोर्थ, permanent data storage. Permanent data storage is handled by HDD or SSD, not the motherboard. Next, second, continuous long beep during boot generally indicate a problem with. देखो ऑप्शन है फर्स्ट प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, रैम, पावर सप्लाई, मॉनिटर. तो करेक्ट आंसर है थर्ड, रैम. Most of the BIOS vendor are use continuous and long beep for memory, that is RAM failure. Next, third, which tool is most appropriate to prevent electrostatic discharge damage while repairing hardware? देखो ऑप्शन है फर्स्ट मल्टीमीटर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, रबर ग्लोव, एंटी स्टैटिक रिस्ट ट्रैप एंड इल्यूस्ट्रेटर स्क्रू ड्राइवर. तो करेक्ट आंसर है एंटी स्टैटिक रिस्ट स्ट्रैप. ठीक है, एंटी स्टैटिक रिस्ट स्ट्रैप इज अ सेफली ग्राउंड द टेक्नीशियन preventing ESD damage to sensitive component. Next, fourth, if computer restart repeatedly before loading the OS, the most likely hardware cause is. तो देखो ऑप्शन है, तर बघा ऑप्शन आहे फर्स्ट करप्ट OS, इनसफिशियंट रॅम, ओव्हरहीटिंग CPU, बॅड कीबोर्ड अँड फॉल्टी मॉनिटर केबल. तर करेक्ट आन्सर आहे थर्ड, ओव्हरहीटिंग CPU. ओके, ओव्हरहीटिंग CPU trigger automatic shutdown or restart to protect the processor. Next, fifth, which connector supplies power to SATA hard drive from SMPS? तो देखो ऑप्शन है मोलेक्स, बर्ग, PCIe, SATA power connector and ATX 12 watt. तो करेक्ट आंसर है फोर्थ, SATA power connector, because modern SATA drive use 15-pin SATA power connector, not Molex. Next, six, a burning smell from the CPU cabinet usually indicate failure of. देखो ऑप्शन है फर्स्ट रैम, हार्ड डिस्क, SMPS, CMOS बैटरी, मॉनिटर. तो करेक्ट आंसर है थर्ड, SMPS. बर्निंग स्मेल इज कॉमनली एसोसिएट विद द SMPS शॉर्ट सर्किट और कैपेसिटर फेलियर. Next, seventh, which component retain BIOS setting when the computer is powered off? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट रैम, ROM, CMOS बैटरी, कैचे मेमोरी, हार्ड डिस्क. तो करेक्ट आंसर है थर्ड, CMOS बैटरी, because CMOS बैटरी power the CMOS chip to retain date time and BIOS setting. Next, 8, a PC power on shut PC power on but show no display. Which component should be checked first? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट हार्ड डिस्क, रैम, SMPS, CMOS बैटरी, कीबोर्ड. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, रैम, बिकॉज लूज और फॉल्टी रैम इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पावर ऑन नो डिस्प्ले issue before suspecting PSU or storage. Next, 8, a system show no bootable device found. The most likely hardware issue is. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट फॉल्टी रैम, सेकंड लूज SATA केबल, थर्ड डैमेज SMPS, थर्ड डेड मदरबोर्ड एंड फोर्थ फॉल्टी मॉनिटर. तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड, लूज SATA केबल, because a loose or disconnect SATA cable prevent the system from detecting the boot drive. वैसे देखिए, अर्थमेटिक मीन्स मैथ्स की फॉर्मूला प्लस प्रैक्टिस सेट्स की पीडीएफ भी अवेलेबल है. जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं. नेक्स्ट 10, विच सिम्टम मोस्ट क्लियरली इंडिकेट अ फेलिंग हार्ड डिस्क. तो देखो ऑप्शन है सिस्टम बीप, स्लो बूट विथ क्लिकिंग नॉइज, थर्ड मॉनिटर फ्लिकरिंग, थर्ड सिस्टम ओवरहीटिंग एंड फोर्थ कीबोर्ड नॉट वर्किंग. तो करेक्ट आंसर है सेकंड, स्लो बूट विथ क्लिकिंग नॉइज. ठीक है, बिकॉज क्लिकिंग साउंड
plus slow boot are the classical indicator of HDD mechanical failure. Next 11. What is the primary purpose of thermal paste on the CPU? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, थर्ड प्रिवेंट कोरिजन, थर्ड improve heat transfer, फोर्थ increase clock speed and fourth protect pins. तो करेक्ट आंसर है थर्ड improve heat transfer because thermal paste fill air gap between CPU and the heat sink to improve heat dissipation. Next 12. Which port is commonly used for connecting a modern display device? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट VGA, HDMI, PS2, RJ45, serial. तो करेक्ट आंसर है सेकंड HDMI. HDMI support both high definition video and audio in modern system. Next 13. If the system date reset every time the PC is restarted, the default lies with. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट BIOS chip, RAM, हार्ड डिस्क, CMOS बैटरी, SMPS. तो करेक्ट आंसर है फोर्थ CMOS बैटरी बिकॉज अ वीक CMOS बैटरी कैन नॉट रिटेन सिस्टम क्लॉक एंड BIOS सेटिंग. नेक्स्ट 14. विच हार्डवेयर कंपोनेंट कन्वर्ट AC पावर इनटू रेगुलेटेड DC पावर? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट UPS, मदरबोर्ड, इन्वर्टर, SMPS, प्रोसेसर. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फोर्थ SMPS because SMPS, that is switch mode power supply, convert AC to multiple DC voltage. Next 15. Which precaution should be taken before opening a computer cabinet? देखो ऑप्शन है फर्स्ट remove RAM, second install antivirus, third disconnect power cable, fourth format hard disk and fifth update BIOS. तो करेक्ट आंसर है थर्ड disconnect power cable because disconnecting the power cable प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक एंड कंपोनेंट डैमेज. ओके, वैसे देखिए जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, कंप्यूटर अवेयरनेस, मराठी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर सभी पीडीएफ्स अवेलेबल है इंग्लिश और मराठी लैंग्वेज में. जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं. जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए. तब तक के लिए धन्यवाद.